चलो इन द मीन टाइम जितने में बाकी लोग नहीं आ रहे, मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे एक चीज जो हमारे कोर्स में नहीं है, बट आई जस्ट नीड टू शो यू in case some of you finds himself or herself in a situation like this. जो हमने स्प्लाइन कवर किए हैं इस कोर्स में और जो आउटलाइन का हिस्सा है वो सिर्फ क्यूबिक स्प्लाइंस है, ठीक है, या क्यूबिक स्प्लाइंस है या क्यूबिक स्प्लाइन से पहले जो जो लिनियर स्प्लाइंस भी है, जो भी हमने कवर किए थे, जो प्लॉटिंग में यूज कर रहा है मैट प्लॉट लिब. सो लिनियर स्प्लाइंस और क्यूबिक स्प्लाइन, जनरली यू कैन हैव अ स्प्लाइन ऑफ एनी डिग्री, तो इसको फिर कहते हैं कार्डिनल बी स्प्लाइन. ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये. So in case you want to solve a problem which requires you to use these splines, तो ये इनने टेम्पलेट दिए हुए हैं इस टाइप का जो है ना आपको, बल्कि इसने बना के दे दिया है आपको, ठीक है. So you just read this and maybe you will have a feel of how these techniques works for higher degree. इसने यहाँ पे दिया हुआ, ये जो सेक्शन है आप सिर्फ नोट कर लें. Section 6.4.7 is for those of you who want to use general B-splines, ठीक है, हम नहीं करेंगे इस कोर्स में. So we move straight to the next section which is regression. और ये बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने इस पे बात की थी कि in the first part of this chapter we were actually solving the problem of interpolation. So interpolation में we don't care कि वो जो हमारे पास polynomial आ जाता है उसकी predictive qualities क्या है, because we never use that to predict something. We just want to fit to the data. और next हमारी requirement ये थी कि we also like, जिसकी वजह से span पे हम आ गए थे, कि we wanted a nice polynomial so that it can actually deal with different types of interpolation problem. Now the next problem is regression. अब regression जो है ना, regression में हमारा goal different होता है. We do not care about being exact. तो polynomial आपका, बल्कि इसके साथ ना मैं ये करता हूँ कि let me just open a new document which is blank in case I want to write on it. ये पैरेलल में खोल जाएगा. तो अब अगर मेरे पास डेटा है, let's say मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, so even if I have a curve which is not exact, but if it can predict, so for example extrapolation or interpolation में, and if it can also deal with new data, so then that is good enough for me. तो regression उसको कहते हैं, ठीक है. Regression में you are actually looking for a model, and interpolation is not a model. So model by definition a model has to be simple, ठीक है ना. अगर मॉडल हर चीज एग्जैक्ट करता है तो फिर उसको मॉडल नहीं कहा जाता, उसको फिर इंटरपोलेशन कहा जाएगा. So maybe this is one thing which you need to keep in mind. Okay, many people because they do not understand the meaning of model, so they will be modeling and they will still be looking for exactness. So these are actually opposite. If you want to be exact, then you should go for interpolation, and if you want to predict, the model has to be simple. So let's get back to this. So the first method which we will learn for regression is what we call the least squares. मेरे ख्याल में the name should also suggest कि जो है ना, और reason ये बता रहा है कि why we wanted regression, because you know we cannot trust data. Any data we get will be noisy. So when the data is noisy, there is no point in trying to interpolate. Yeah, there is no reason why you should care about being being exact. Fitting, but the fitting should not be your goal. So we only want to approximate. So what if we want to have a linear model? ठीक है, अगर मेरे पास linear इस तरह का linear model चाहिए straight line के form में, so you know very well the equation.
right, of a straight line in scalars, if x and y are scalars. So, but remember that this line has to be approximated for data, और data इस फॉर्म में होगा, ठीक है. So उसी तरह इंटरपोलेशन की तरह we will start with some conditions कि we need to calculate these coefficients a and b in such a way. So one way will be to look for these uh, exactness, but the other will be to look for some other criteria. अब अगर आप इस एक्सप्रेशन पे गौर करें, ठीक है, so you know the line we try to fit is of this form. हमने ऊपर देख भी लिया था. क्या था, y equals x plus b. So let me just write that down. So y equals ax plus b is the line I am looking for, which means that I do not know a and b. This is what I have to calculate. So if I now look at this expression, can you tell me what this expression is representing? इस समेशन को छोड़ दे, ठीक है, डोंट लुक, जस्ट लुक एट दिस थिंग. तो आपके हल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेट मी ब्रेक इट डाउन. या सो ये जो पार्ट है इसका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लुक देयर. आपको आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज आ रही. तो ये फिर कोई बता देना कि मैं क्या पूछ रहा हूँ. ए एक्स आई प्लस वाई को करते हैं. हाँ, तो वाई आई तो लिखा हुआ है ये, तो फिर ये क्या है? ये सर जो प्रेडिक्ट करेंगे हम. जो सर जो प्रेडिक्ट करेंगे हम. जो अच्छा, तो बेसिकली ये मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल की प्रेडिक्शन और ये एक्चुअल है. सो व्हाट यू आर ट्राइंग हियर, यू आर ट्राइंग टू calculate the difference, and because the difference can be positive as well as negative, and positive and negatives, they are equally bad and we don't want them to cancel each other. So हम absolute value ले रहे हैं. Absolute is telling us the error, ठीक है. So basically ये error है हर point पे. We just add all the errors and then we want this overall quantity to be as small as possible, ठीक है. So our goal should be to minimize this quantity. Minimize. So minimize the error, but the overall error, yeah, not the individual. तो अब इसमें ना आपका गोल भी क्लियर हो गया कि you do not, although you do not care about the exact fitting, but you do care about the overall approximation. It should still be closer. ठीक है, ये नहीं है कि बस वो बिल्कुल जो है ना वो कहीं आस पास भी ना हो. So we minimize. तो इसको आप क्या नाम देंगे? Let's say if this is your problem, तो ये जो इसने यहाँ पे दिया हुआ है title, do you think something is wrong with the title if we stick to that thing only? ये टाइटल क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमें क्या मिनिमाइज करना चाहिए? स्क्वायर को सर. स्क्वायर को ना, हम तो वहां पे स्क्वायर को नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां पे किसको मिनिमाइज कर रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू. हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर को कर रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इट. या कंप्यूटेशनली दिस इज मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपको याद होगा कि आपने कैलकुलस में जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज था, आपको याद होगा ना, कैलकुलस में ऑप्टिमाइज, मैक्सिमम, मिनिमम. या तो if I try to remind you some of that part of the discussion where you have some curve और आप कहते हैं कि ये मैक्सिमम है और ये क्या है? मिनिमम है. तो डू यू रिमेम्बर कि इसको हम कैसे वहां पे करते थे? हाउ डिड वी डिटेक्ट मैक्सिमम, मिनिमा? देयर वर 2 steps if you remember. Let's say this is x and this is f of x.
So what are the conditions for this to be maximum? एक ये होता था, ठीक है, लेकिन वो तो इधर भी है। मैक्सिमम दोनों पे डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट जीरो होता है। So the next condition was the double derivative must be negative because we want the slope to decrease. Yeah, that's what the negative is telling you. Negative, the double derivative negative means that the slope is going from positive to negative. और यहाँ पे we want the slope to go from negative to positive, so that's a positive change. So the slope of slope is positive. अब ये जो डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन, ये चेक्स आप तभी कर सकते हैं ना जब आपका फंक्शन स्मूथ हो, ठीक है, स्मूथ फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो फंक्शन है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन, एक्स ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे आप लिखा दे एब्सोल्यूट, इसका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे होगा। तो डू यू सी द प्रॉब्लम हियर ऑफ डिफरेंशिएशन? इसको अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें एक दफा और फिर 2 दफा, तो कहाँ पे मसला आएगा? किस पॉइंट पे यहाँ पे मसला आएगा डिफरेंशिएबिलिटी का? Yeah, if you look here, it's very easy कि slope इसका 1 है, so that's we can easily say that the derivative is 1. Here the derivative is -1, yeah. But here we cannot have a derivative of minus and plus at the same time. So what we see here is that at the origin this is not differentiable, not differentiable. इसका मतलब ये जब फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है तो फिर सेकंड का क्या होगा? सेकंड तो उसकी वो तो पॉसिबल ही नहीं है। So we look for functions that are differentiable, and this absolute function, although it does capture our notion of error, जो हमारे डे टू डे लाइफ में एरर से जो हमारा मतलब है वो इसको कैप्चर तो कर रहा है, लेकिन मैथमेटिकली इज नॉट वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। तो अगर हम इसकी बजाय if we change the function, if we replace it with the squared error, तो स्क्वायर में एक तो मैथमेटिकली नाइस है, इट्स डिफरेंशिएबल एंड इट्स डिफरेंशिएबल ट्वाइस। अब होता है मैक्सिमम मिनिमम पे आपको सेकंड भी चाहिए डेरिवेटिव, और इट इज स्टिल हैविंग दैट एसेंस, या स्क्वायर होने की वजह से ये नेगेटिव नहीं हो सकता, सो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई जो टाइटल है वो लीस्ट स्क्वायर्ड है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। So if we now calculate the sum of squared errors, so the sum, this is the sum, and we are squaring errors, so sum of squared error, and this function we want to minimize this, because we want to minimize this, so we call it the least squared regression, least squared regression. और ये आप अगर कैलकुलस में जाएं, ऑफ कोर्स वी आर नॉट इनटू कैलकुलस, सो वी विल नॉट डिराइव दिस, लेकिन आपको सिर्फ ये कंडीशन नजर आ रही है कि दैट सम। अच्छा, आप कोई ये गेस कर सकता है कि इस राइट साइड पे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। रिमेंबर you see xi, right, yi, a, b, n, तो ये यहाँ पे इसने सिर्फ a और b क्यों लिखा हुआ ब्रैकेट में? S depends on everything. S depends on a, it depends on b, it depends on n, it depends on xi, it depends on yi, all of them. So यहाँ पे a और b के अलावा इन बाकी चीजें क्यों नहीं लिखी? Any idea? सर क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट्स होंगे। Yeah, they are known basically. You know everything. हाँ, known सही है। A and B are the only unknown, और आप ऑप्टिमाइज इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि जब ये मिनिमम हो जाएगा तो वो A और B की जो वैल्यू इससे आपको मिलेंगी, that is what you are looking for. You're not looking for xi and yi and n, ठीक है।
तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इसी तरह की होंगी कि उसमें सिर्फ अननोन and there is even a name for these things to distinguish them from the other numbers. They are called parameters. आपने नाम सुना होगा, parameters of the optimization problem. So अब ये इसलिए जरूरी है कि when you जब आप देखो ना, जब आप कैलकुलस में होते हैं तो आपके पास हर चीज x और y में होती है, ठीक है, क्योंकि x and y are your variables. Here your variables are a and b, so आप differentiation भी with respect to a ही करेंगे और with respect to b करेंगे. It looks different, but this is what you need to do. You shouldn't care कि ये x है या y है या a है या b है. So you actually carry on all that calculus and apply the conditions और फास्ट फॉरवर्ड करके बेसिकली हमारे पास अगर हम ये चार चीजें डिफाइन कर दें without getting into math. So I'll come to this equation. First we need to discuss, let's say that you are given these four quantities and you don't want to go to the derivation, you don't want to go to all the math, you just want to make sense of this. तो आप बताएं कि इसमें जो पहला है, because I want you to have your own language. You know the right hand side, yeah? Sum of x coordinates. तो आपके ख्याल में ये आपको क्या देगा? इसको आप कैसे जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब if you want to describe this in word, so what is the best way of describing it? So sum of all x coordinates. Yeah, that is what it says as well, right? But I need you to modify it in such a way that it is more meaningful for data. आपको जब डेटा दिया जाता है तो do you speak of the sum or do you speak of something else? आपके क्लास के मार्क्स आ जाते हैं ना सेक्शन 1 में. Sir, average, sir. Yeah, we are more interested in, because that is more meaningful. So it is more meaningful to think of it as the mean value, ठीक है, और ये n+1 होगा क्योंकि 0 भी इसमें शामिल है. So आप इसको डिवाइड करके you get a meaningful thing and then you multiply. That's not a big deal. Similarly, this is the average of the output values. Yeah, ये बताएं ये क्या है? ये इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं ना कि if you divide, you will say the average, the squared average. But why should the squared average matter here? आपको ना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के कोर्स में याद है एक होता था मीन, तो ये बेसिकली हमने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन. हाँ, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले भी एक चीज होती थी. स्टैंडर्ड डेविएशन वाज द स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग. वेरिएंस. या दैट वाज वेरिएंस. ठीक है, वेरिएंस. तो बेसिकली वेरिएंस का अगर आपको फार्मूला याद है तो उसमें इस तरह के स्क्वायर्स आते थे. डू यू रिमेंबर? यस सर. Yeah. So basically these two, this is something which is let me just modify the formula and then you will see the variance in it. अभी आपको वेरिएंस नजर नहीं आ रही. अगर ये मैं let's say ये आपको यहाँ से मीन मिल जाता है ना इधर से, and let me call this mu x, yeah, mean of x, and let's call this mean of y. तो अगर ये इस फॉर्म में होता ना xi minus mu x और मैं उसको स्क्वायर करके ये सम कैलकुलेट करता, दिस वुड हैव बीन, और फिर मैं उसको डिवाइड करता n पे, सो दिस वुड हैव बीन दैट वेरिएंस. ठीक है, वेरिएंस ऑफ x. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया. सो वी नो वी कैन मेक सेंस ऑफ p, q and s. अब आप ये बताएं जो आखिरी चीज बच रही है उसको, हाउ डू वी गिव मीनिंग टू दैट? दिस वन, थिंक अबाउट इट. And to help you, first see this thing as if you are multiplying xi with xi. Yeah, I know it is equal to x squared, but
एक्स स्क्वायर इज द सेम एज एक्स टाई टाइम एक्स टाई। तो वहां पे एक्स आई को आप एक्स आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स आई को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वाई आई से। सो व्हाट, हाउ डज द मीनिंग चेंज? नो आइडिया सर। ओके, ये बात आपको समझ आ गई थी कि ये इट्स रिलेटेड टू वेरिएंस, ये वाली। तो अब अगर वही रीजनिंग मैं इस पे अप्लाई करूं, सो आई कैन से कि in a different form it will be a product of xi minus mu x, right? Yeah, and yi minus mu y, and then I'm adding, and then I'm taking the average. Yeah, तो अब आपको कुछ नजर आ रहा है? पहले इसको स्क्वायर कर रहे थे हम, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x और y की डिविएशंस को। सो ये वेरिएंस की जगह क्या हो जाएगा? यू नो द नेम बेसिकली। एक वेरिएबल का वेरिएंस होता है, तो दो का बेसिकली आप ये दोनों का कर रहे हैं ना, यू मल्टीप्लाई वन विद द अदर रादर देन टेकिंग द स्क्वायर ऑफ वन। ये मैं कैसे मान लूं कि आप ये सुना नहीं है? इट इज एक्चुअली covariance. कोवेरियंस। So this tells you how the x data and the y data vary together, क्योंकि जब ये when they vary together then the product will add up to a large number. So think about it. Let's say I have two columns, ठीक है, और उनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल रैंडमली इधर उधर से आपने उठा लिया, और चूंकि आप इसको सेंटर भी कर रहे हैं ना, रिमेंबर वी आर सेंटरिंग इट, दिस इज लाइक सेंटरिंग इट। तो center, so some points will be to one side of the center, some will be to the other side of the center. तो अब वो चूंकि रैंडम है तो वो कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा, you do not expect the sum to be a large number because they can randomly cancel each other. But if they relate, if they co-vary in some reasonable way or regular way, then they will vary together. तो उसमें ये होता है जिस तरह आप स्टेप्स करते हैं ना, दो लोग जैसे डांस करते हैं और वो उनके स्टेप्स मिलते हैं। So you can expect this sum to be larger because the positive might team up with the positive and the negative might team up with the negative, and you can still get a large number. So covariance actually is important for that reason. Okay? So let's remove this now. Tool edit, remove all annotations to clean it. Okay. Now once you know the meaning of these four quantities, and they all can be computed from the data. Okay? So you can turn basically these equations which you got from that calculus. You just have a system of equations. Yeah, for a computational scientist, this is all what matters. Okay, you don't need all the derivations. तो अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास P जो है ना इधर से आ रहा है, ठीक है, so that is just something calculated from data. Q भी उधर से आ रहा है, ठीक है, R भी उधर से आ रहा है, और S भी उधर से आ रहा है। n+1 is something we already know, the number of data points. इसमें unknown सिर्फ A और B है, and that is what you actually are looking for. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, इट्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यू जस्ट सॉल्व इट, और आपको क्रैमर रूल वगैरह आपको याद आ जाएगा, आपने काफी दफा किया होगा, ठीक है। If you apply Cramer rule to this, you have these nice expressions for A and B, and these, if you compute A and B in this way, this will minimize that sum, and we can now call it the linear least square or linear regression. अगर आपने लिटरेचर में सुना है तो उसका बेसिकली linear least squares ही उसको कहते हैं, linear regression को. So we can now code all of this. Yeah, ये आपका algorithm है. वही algorithm में बस बेसिकली आपने ये चार quantities compute करनी है, ठीक है, and make this yeah, because इसमें कोई determinant भी आ रहा है और determinant को आप अलग से calculate कर रहे हैं.
So you also calculate the determinant, and you use that determinant in Cramer's rule, and you get your A and B. So basically ये वही Cramer rule है जो आप FSC वगैरह में आप use करते रहे हैं, even before you you joined this university. So Cramer rule is something you already know. अब आप इसको आप कर दें, अगर आप इसको implement करना चाहते हैं Python में, let's give it a name, linear least squares. और इसको क्या क्या चाहिए? X data, Y data, X data, Y data. And X is the point of computation, okay? आपको जिस जगह पे भी कंप्यूट करना है, ये हम इंटरपोलेशन में भी सीख रहे थे. So तो ये this is a simple translation of all those formulas, Cramer's rules, and you return your prediction. ठीक है. अब यहाँ पे इसने हम यहाँ पे एक चीज नोट करें कि this algorithm, this Python implementation is a little different from this algorithm. कोई आपको नोट आपने फर्क नोट किया है? एक जगह पे डिफरेंट है, हालांकि अदरवाइज इट्स सेम आइडिया. तो आई वांट यू टू सी कि क्या डिफरेंट है इनमें, किस जगह पे ये उससे अलग हो जाता है. जस्ट लुक एट दिस. ये क्या कंप्यूट कर रहा है? ए बी. ठीक है. तो अगर ये एग्जैक्ट रेप्लिका होता तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए था? should have returned AB, but it's not returning AB. It's using that AB because ultimately you will need that line. तो उस लाइन को ये कंप्यूट करके, because we know that A and B will identify this line and we are just using this line as our model. तो ये उससे एक स्टेप आगे जाके, क्योंकि इसको पता है कि आपने करना ही करना है, तो उसको एक ही फंक्शन में आप दोनों काम कर लेते हैं. ठीक है. So if we want to actually test it, let's say हमने रैंडम डेटा उठाया है और वो रैंडम डेटा हमने इस लाइन से उठाया है, इस लाइन के साथ नॉइज ऐड करके. अब इंटरेस्टिंगली लेट्स जनरेट सम डेटा बिटवीन -1 एंड +1. ठीक है. And let's apply this line. So we apply this line and then we add some random noise, yeah, to make it noisy. ठीक है. और अब हम ये लाइन we pretend कि we do not know about this line और हम ये डेटा अब दे देते हैं अपने फंक्शन को, see whether the function can deal with it, क्योंकि डेटा को हमने भी noisy कर दिया है. ठीक है. So yeah, this is what you do in synthetic data. So अब आप देखिए कि यहाँ पे because we will be testing, so we generate more points. और 10 पे ये जो 10 पॉइंट्स है, ये और ये जो डेटा है, इन दो को हम यूज कर रहे हैं उसके लिए, अप्रोक्सीमेशन के लिए, एंड देन वी विल बी यूजिंग दिस डेटा फॉर चेकिंग द फंक्शन. तो अब आप देख लें कि it has captured the essential line, yeah, although the function doesn't know about this straight line, लेकिन उसने चूंकि मिनिमाइज कर दिया है इसको. अब आप देखिए कि ये जितने भी इंडिविजुअल एरर्स है ना, ये इनको simultaneously minimize कर रहा है. Yeah? So that's why you need that linear algebra and Cramer rule, ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को जो है ना मिनिमाइज करते हैं. अब अगर ये फॉर एग्जांपल वो होता, इंटरपोलेशन का प्रॉब्लम होता, तो हम क्या करते? We would have done something like this. Yeah? Even spline भी अगर हम कर लेते, हमें फिट मिल जाता, लेकिन you know this does not capture the model. Yeah. So it will give us very bad prediction, and that line is expected to give us good prediction.
अब ये बेसिक आइडिया तक तो ठीक है हमारा कि we learned how to fit a straight line in such a way that we get a model, the linear regression model. But not every data is of this kind. You cannot expect that a straight line will fit to all kinds of data. और इसकी मैं ना 2-3 एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी. एक दफा ना मैंने आपको क्लास में डोमेन की बात की थी कि बिफोर यू अटैक अ प्रॉब्लम यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डोमेन कि वो किस डोमेन का प्रॉब्लम है. वो वेदर का प्रॉब्लम है या वो बैंकिंग का प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल डेटा है या जो भी है, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ, वो किसी इंजीनियरिंग की किसी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है. All these different domains have certain patterns. They have certain patterns. So, maybe you, after investigating the domain, it turns out that you expect an oscillatory data. Now, you cannot have a straight line to capture oscillatory behavior. ठीक है ना? So, straight line will not be a good starting point. इसी तरह कुछ cases में let's say you are in 2 dimensions, x, y, and maybe it turns out that the data has to organize itself along some circle. वो circular form में वो data आप expect कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो मर्जी straight line यहाँ पे लगा दे, वो circle को capture नहीं कर सकता. So these are just few examples. आपने मेरे ख्याल में ये भी देखा है, you have seen exponential decay, exponential growth, yeah. So exponential decay और exponential growth पे straight line तो नहीं लगेगा ना, जो मर्जी आप कर ले. So which means that we should look for other options, yeah. And a good starting point is to use polynomial fit. ठीक है? Instead of a straight line, we should look for some polynomial, yeah, a quadratic or a 3rd degree polynomial or a 4th degree polynomial. So in general, we can be interested in an mth degree polynomial, and m can change depending on problem to problem. Sometimes we could be happy with just a quadratic formula. Sometimes m needs to be high, yeah, so on and so forth. तो अब वही एक्सरसाइज हम करेंगे. अब इसमें ना यहाँ पे एक चीज जो है ना बड़ी टेम्पटिंग है टू गेट इट रॉन्ग, बिकॉज वी स्टार्टेड विद पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पे पॉलिनोमियल में अगर आप x के ऊपर फोकस करें तो दिस अपीयर्स टू बी अ नॉन लीनियर प्रॉब्लम. ठीक है, नॉन लीनियर का मतलब ये है कि हमने जिस तरह यहाँ पे लीनियर, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे बन गया था एंड पे, इट बिकेम अ लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम. ठीक है, आई वांट यू टू सी दिस इक्वेशन. ठीक है, this is just a system of linear equations. अब यहाँ पे एक गलती आप कर सकते हैं कि आप कहें कि ये linear equation इसलिए आए हैं because we were looking for a straight line, क्योंकि वो भी linear था, straight line भी linear होता है, तो हमें यहाँ problem भी linear मिल गया. ठीक है, this is one way of reasoning, and I'll now tell you why this is wrong. Yeah? The reason why we get this system of linear equation is not because of the straight line. Because if this is true, then we should expect here, when we go for polynomials, we know polynomials is not a straight line, so we should expect a non-linear problem. और आपको पता है linear algebra में non-linear problem आप solve नहीं कर सकते. It's very difficult. Linear algebra is only about systems of linear equations. So if you think about it, यहाँ पे unknowns क्या है? What are the unknowns in this expression, in this polynomial? बताएं. जिस तरह वहां पे unknown क्या थे उस केस में, I'm just writing that equation again for you. Yeah, A and B were my unknowns. So here, what are the unknowns?
मुझे तो लग रहा है आप क्लास में पता नहीं है कहीं और जो है क्या है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ए सर। ए के, ठीक है। सो बेसिकली A0, A1 all the way up to AM. Now if you look at it, सर जी sorry, सर वो कुछ बच्चे हैं, उनको अपने माइक्रोसॉफ्ट का पासवर्ड नहीं मिला, तो वो पूछ रहे क्या करूं, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। नहीं लेकिन वो पासवर्ड तो देखो ना, वो तो उनको मिलना चाहिए ना। सर रीसेट कर लें हो जाता है। क्या करें, वो कैसे रीसेट कर, रीसेट कर लें। हाँ रीसेट करें तो आपके रीसेट बैकअप करना ही ईमेल होगा। पे आ यहाँ जाता पे है। तो मसला ये है कि ये इफ वी अलाउ एनीवन फ्रॉम आउटसाइड NU, तो कोई भी आ सकता है यहाँ पे। आई हैव नो वे ऑफ वेरीफाइंग। तो यहाँ पे शोगल मेला भी लग सकता है, आपको पता है बहुत सारे नौसरबाज दुनिया में फैल रहे हैं। सो उनको वह रीसेट करके और ये जो है ना इसको सिचुएशन करे। अच्छा अब आप ये बताएं कि इस प्रॉब्लम में हमारा जो लिनियर अलजेब्रा का प्रॉब्लम बनना है या जो भी ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम बनना है, वो तो n में बनना है, n वेरिएबल्स में। दीज आर द अननोन्स। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज कांस्टेंट्स, अब आप इस एक्सप्रेशन को दोबारा देखिए, ये लिनियर है या नॉन लिनियर है? linear. Yeah, so you see this. So despite the fact that we are looking for a polynomial, that polynomial is still linear in the unknowns, क्योंकि हमें तो अननोन से गरज है ना, हमें डेटा से तो गरज नहीं है। डेटा को आप स्क्वायर करें या ना करें, आई डोंट केयर। ठीक है, समझ आ गई? So we will still get a system of equations, and linear algebra will still be the way to solve this problem. Yeah, despite the fact that we are looking for a polynomial. So that is very good to know. तो अगेन ये बेसिकली वही स्टार्ट है, वही मतलब यहाँ पे हम लीस्ट स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन में भी it becomes a least square problem because you are still looking for the squared error and then you are summing. Yeah, squared error and summing, and the calculus doesn't change. It's just multivariable calculus. The only thing that is different now is instead of a calculus in one dimension, you are doing calculus in two dimensions, right? Multivariable calculus. आपने कोर्स पढ़ा है मल्टीवेरिएबल का? कैलकुलस के कितने कोर्सेज होते हैं इस BS के प्रोग्राम में आपके? सर ये मल्टी वेरिएबल का अभी स्टार्ट किया, पहले नहीं था सर। हाँ सिंपल नहीं, तो कैलकुलस अभी आप लोगों ने पढ़ा है या वो पढ़ रहे हैं अभी? नो सर, वो जो न्यू बैच आए हैं उनको अच्छा, वो अब उनके लिए ये पढ़ा रहे हैं। वो असल में जी, ये दिस वाज एक्सपेक्टेड, ओके, दे हैड टू इंक्लूड दिस। उसकी वजह ये है कि आपकी जो डीप लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम्स है ना, वो सारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स है, एंड यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड दोस पेपर्स इफ यू डोंट नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। ठीक है ना, इसलिए आप वहां पे टेंसर्स आपको मिलेंगे। आपने टेंसर फ्लो नाम सुना होगा ना, टेंसर फ्लो। तो टेंसर्स आर एक्चुअली मैट्रिसेस। सो हियर यू डू हैव अ फ्लेवर। आपने अगर मल्टीवेरिएबल कैलकुलस ना भी पढ़ा है तो ये कंडीशंस उसी तरह बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे ना, इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स यू विल हैव पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो इसके अगर मैं आपको ना बेसिक आइडिया देना चाहूँ, ये ऐसे होगा कि इंस्टेड ऑफ ए कर्व यू हैव ए सरफेस। या इमेजिन अ सरफेस, जिस तरह वो जो हम्प होता है ना उसका, कैमल्स का, कैमल की आपने देखी है बैक, वो ऐसे होती है ना। तो लेट्स से आपने ये एस्टेब्लिश करना है कि उसका पीक है, so you have to basically look at two curves, one along this dimension and one along this dimension. तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम होना चाहिए और इसका भी मैक्सिमम होना चाहिए, so you have to actually calculate two derivatives, yeah, x1 and differentiate with respect to x2, and you set both to 0, and then you have the second order conditions, and yeah, you don't need to get into all that stuff. Ultimately you will still get this system of equations, linear equations. The good news is that you still have linear equations, और remember वो जो constants है, unknowns, coefficients, they have been listed as a vector z. That z is your unknown, और matrix A और matrix B को अगर आप देखें, this all comes from data, और इसका वही पैटर्न है, देखें
इसमें वो सम आ रहा है, देखे ना, सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, so all that meaning variance, covariance, yeah. So you can actually make sense of it in this in a similar way. सर हाँ सर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं न्यू की आईडी से। वो कह रहे हैं उनको क्लास लेनी है तो उनके पास वो एकेडमिक ने पासवर्ड नहीं दिया हो उनको माइक्रोसॉफ्ट का। तब ये क्या किया जा सकता है? वो फिर बच्चे रिकॉर्डिंग फिर देख लें। क्योंकि हमें तो स्ट्रिक्टली उन्होंने जो है ना वो आउटसाइड अकाउंट से मना किया हुआ है। तो वो उसको रिजॉल्व कराएं इस इशू को जल्दी, ठीक है ना, एंड मे बी दे कैन एक्चुअली सी द रिकॉर्डिंग और लेटर ऑन। और अटेंडेंस के लिए बेसिक इफ दे राइट एन ईमेल देन आई विल एक्चुअली वेरीफाई दिस फ्रॉम द आईटी टीम। अगर वो वेरीफाई कर दे तो उनकी अटेंडेंस जो है ना वो किसी न किसी तरह से मैनेज की जाएगी। फिर सर उन्होंने मेल कर दी हुई है पर उनका अभी रिप्लाई नहीं आया एकेडमिक ऑफिस से। अब ये जाती है ना, वो उनको कहे उधर ईमेल कर दे जो आईटी टीम है। आईटी टीम का कोई जो है ना आईटी टीम में कौन है, मैं यहाँ पे एक ईमेल आपको बताता हूँ ना, उधर से आप वो कहे उनको ईमेल कर दें, ही शुड रिप्लाई। जी सर। एक सेकंड, वसीम शहजाद, डायरेक्टर साहब ने एक ईमेल की थी हमें। तो ये मैं कहाँ लिख दूं? यहाँ पे है कोई चैट विंडो, चैट, इसको ईमेल सर अपनी मेल भी लिख दो। अभी आपको नजर आ रही है, ये उनके साथ शेयर कर दे, ठीक है। सर अपनी मेल भी लिख दो सर। मेरी ईमेल लिख दें? जी सर अपनी भी लिख दे, वो मेल कर दे आपको। अच्छा मुझे ईमेल कर दे, ठीक है। सर आप लॉबी पे जाके इनको एक्सेप्ट कर देना जो एक्सटर्नल आईडी से। नहीं लेकिन एक्सटर्नल आईडीज आपको क्या ख्याल है कि वो तो एनयू के तो नहीं होंगे ना? वो तो एक्सेप्ट तो कर सकते हैं ना आप। नहीं, लेकिन एक्सटर्नल कोई जीमेल का होगा, देन आई हैव नो वे ऑफ वेरीफाइंग कि वो हमारा स्टूडेंट है या नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना, फिर समझ आ गई? ये आपको पता नहीं है, लेकिन जब ये हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे ना कोविड में, आप लोग उन दिनों में स्कूल में होंगे, तो ये अलाउ हम उस टाइम करते थे, और लोग आके वो जो हरकतें करते थे वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फिर हमारी पॉलिसी स्ट्रिक्टली ये है कि जीसीआर में या टीम्स में कोई भी आउटसाइड से नहीं आएगा। सो द ओनली वे टू गेट इन इज योर एनयू। तो आप बेशक इसको सीसी कर दें, उसको ईमेल करके मुझे सीसी कर दे ताकि मैं फिर फॉलो अप करूं, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू दिस। और ये है कि so we will have to solve this system of equation. Of course you're not going to solve it, वो तो Python नहीं करना है, लेकिन you get the main picture. और इसमें if you want to implement this algorithm दिया हुआ है, तो straightforward implementation है इसकी, least squares, and this time instead of linear you have poly, और number of points, ठीक है, point of calculation. And remember the point of calculation can itself be an array because of numpy, dealing with arrays as well. और ये x और y आपके पास डेटा हो गया, and the rest is very standard, yeah, A matrix, B matrix. So this is standard stuff, nothing special. And make sure that you convert all these, because this is now your coefficient. ये z है वही जो आपके पास a0, a1, a m जो है ना, ये z वेक्टर में आ जाएगा,
and that z vector can then be used to construct your polynomial. ये आखिर में polynomial बना रहा है फिर function polynomial, बल्कि ये function नहीं है, ये polynomial को basically evaluate कर रहा है उस point पे, ठीक है ना? So normally these functions they return a function, but in this case it is not returning a function. It is returning the value of the polynomial at the query point. यहाँ पे भी आप note कर लें कि इधर भी इसने function return नहीं किया था, वो query point पे जो value है वो return की थी, ठीक है? But this is different from SciPy. SciPy के जितने भी module है ना, वो आपको function return कर देते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि ये x आप फिर उस function को देंगे। तो यहाँ पे this code can be written without this x, ठीक है? And SciPy. अच्छा, अब ये मैं पता नहीं, मुझे याद पड़ता है कि ये मैंने कहीं देखा था। अभी मैंने ये इंग्लिश में मैंने ये कह दिया दिस कोड। डू यू थिंक ये मैंने ठीक बोला है, दिस कोड? बिकॉज समवन वंस टोल्ड मी दैट दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। इसको कैसे ठीक करेंगे? द कोड? नो दिस तो ठीक है, दिस में मसला नहीं है, क्योंकि strictly speaking code is not countable, yeah. तो they suggest this piece of code, इस तरह हुए this piece of code, ठीक है? Okay. But I don't know if how far is that. इस तरह ये water के बारे में है ना, water, you don't say this water, you say this body of water, yeah. So there are things which are not countable and then you have to change it. So let's try this now that we know the function. और अच्छा, ये जो फंक्शंस यहाँ पे लिखे जाते हैं आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझाने के लिए है, ठीक है ना? दे आर नॉट द बेस्ट, दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू राइट अ फंक्शन। तो वो तो अल्टीमेटली SciPy में ही अवेलेबल होगा या NumPy में भी हो। ये वाला फंक्शन NumPy में भी है। बट इफ यू वांट टू चेक इट, यू स्टार्ट, you generate data from this polynomial, let's say quadratic, and again add some noise, yeah. So you have this original grid, you use that equation of quadratic with some noise and then pretend that your function doesn't know that, and then these are the points at which you want to evaluate. Call your function again, x, y, points of evaluation, and this 2 means that this is quadratic, yeah. So ये आप check कर ले तो it is doing a pretty good job, yeah. ठीक है, उसने वो quadratic nature को कैप्चर कर दिया है, ठीक है। अब आप देखें ना, अगर आप ये इसको करें इंटरपोलेशन से, तो इंटरपोलेशन पता नहीं क्या क्या हरकतें करेगा इधर, ठीक है। सो दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड मॉडल। अच्छा, अब ये तो हो गया पॉलिनोमियल्स का। सो लिनियर पॉलिनोमियल, समटाइम्स द फंक्शन विल बी सच दैट नो मैटर व्हाट, देखिए नॉर्मली पॉलिनोमियल में हमारे जहन में ये आ रहा है कि यार इफ इट इज नॉट, इफ हमारे जहन में बेसिकली टेलर सीरीज होती है, टेलर सीरीज, and what we have in mind that okay, if I can't, क्योंकि ये तो आपको नहीं पता होगा ना रियल में कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, so you will try quadratic and it will be a bad fit. So let me just give an example here. So let's say I have this data exponential, और डेटा मैं जनरेट कर लेता हूँ एक्सपोनेंशियल से with some noise and then I remove the exponential. अब मॉडल जो बना रहा है उसको नहीं पता कि एक्सपोनेंशियल है, तो वो इसके ऊपर ट्राई करेगा पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल जितना भी आप ट्राई करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल इज अ डिफरेंट फंक्शन, कंसेप्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल, तो ये फिर आप जो मर्जी है कर ले, वो कैप्चर नहीं करेगा उस एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को। इसी तरह साइनसॉइड को एक पॉलिनोमियल कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स डिफरेंट थिंग।
So if you know again from domain knowledge से अगर आपको कोई hint मिल गया है या ना भी मिला है, you use your hunch basically. Sometimes you have some educated guesses. So उस केस में you can try different functions और उसको फिर हम कहेंगे non polynomial fit, right? Non polynomial fit. Let's say you somehow have this feeling कि यार exponential को try करना चाहिए क्योंकि maybe the decay is exponentially fast. और ये fast बहुत जरूरी है क्योंकि जो फर्क है ना exponential और polynomial में वो है उसमें स्पीड में कि फंक्शन कितना जल्दी ग्रो कर रहा है. तो अब अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखें और पॉलिनोमियल ग्रोथ को देखें, आपने इवन पॉलिनोमियल वो भी देखे हैं ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है. सो पॉलिनोमियल टाइम या और एक्सपोनेंशियल टाइम. तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल एक्चुअली द स्लोप चेंजेस विद द डेटा एंड इट एक्चुअली ग्रोज वाइल्डली, और ये पॉलिनोमियल उस तरह से नहीं होता. So if you have that suspicion, then you should try exponential. There's nothing wrong with it. ठीक है. और यहाँ पे आपके unknowns हो जाएंगे a और b क्योंकि e तो constant है और x आपका डेटा हो जाएगा. Now the problem is we are looking for an exponential function, but we still want to use linear algebra. So you need some transformation so that you can still use linear algebra. Linear algebra cannot be applied to these exponential, क्योंकि अब मसला देखो ना, एक्सपोनेंशियल में आपके पास एक a तो इधर आ गया लेकिन b ऊपर चला गया. So now this is non-linear in the parameters as well. अब जो unknown है a और b, now the function is not linear in a and b. So अब आपकी linear algebra यहाँ पे नहीं चलेगा. तो आप क्या करेंगे? Your favorite method which you typically apply, logarithm. You apply logarithm on both sides. और आपको पता है कि logarithm exponential के साथ क्या करता है? It will bring this unknown b here as a coefficient, and now you deal with this as your problem. आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करें, instead of working with y, you work with log of y. ठीक है. अब उसका फायदा ये होगा कि आप ये जो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन आपने की है डेटा पे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सो या यू कैन नाउ यूज लिनियर अलजेब्रा. बस सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि when you find these unknowns a and b, they will be for the transformed problem. लेकिन आपको तो ओरिजिनल फंक्शन चाहिए ना, तो फिर आप इसको अनडू दोबारा कर लें. जिस तरह आप ना मैथ में कभी कभी यू मल्टीप्लाई बाय 2 बट देन यू डिवाइड बाय 2 एज वेल टू कैंसिल इट. So you take the log to solve your problem by linear algebra, but later on you have to take antilog. Yeah, और antilog क्या है? Exponential है. So you have to undo the logging so that you get back to your original problem. और original problem आपका क्या है? वो exponential है. तो अब आप pay attention to this, ठीक है? कि हम वही linear जो है ना linear least squares यूज करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा है, but we will apply it to an exponential problem. So you start with this exponential, you generate some grid, then you use this exponential with some noise, and then pretend that you don't know the exponential. Now you take the log because you want to use linear algebra, you turn it into a linear problem, apply that function, z will be the coefficients for the logarithmic problem, and here you undo. Yeah, and this line you undo the logarithm to get back to your original problem and then plot. ठीक है. So this is the trick. ठीक है ना? It has captured the exponential behavior. So remember, the step is to first take log and then solve your problem by linear algebra. And once you have the model, you have to change it back
by taking the exponential again. Yeah, exponential again. And this has to be natural logarithm. You cannot use other logs. क्योंकि this is simple. अब अगर हम ये देखें कि numpy में ये चीजें हैं या नहीं है, so luckily you don't even need to go to SciPy. NumPy does have two functions which will solve your problem. So one function is called polyfit. Polyfit, how is polyfit different from this function, which you need to understand this, okay? तो ये हमने poly लगा दिया, poly least squares, और ये आपको क्या दे रहा है? It requires the point of calculation as well, because it doesn't return a function, it just wants to give you the value at your query point. तो इसलिए आखिर में ये फंक्शन नहीं देता, ये आपको कैलकुलेट करके वैल्यू दे देता है. But that's not what NumPy does. NumPy क्या कर रहा है? NumPy आपको it returns the coefficients of the polynomial. So it returns those a's, 0, a1, am as an array. हो सकता है आपको ये array दे दे, z या जो भी आप इसको नाम दे दे. पॉलीफिट, ठीक है? तो पॉलीफिट क्या कर रहा है? चेको, इसको डेटा चाहिए x डेटा, फिर इसको क्या चाहिए? y डेटा, तो y डेटा हो गया. You need to tell the degree of polynomial कि आपको कौन सी चाहिए, आपको 3rd degree चाहिए, 10th degree चाहिए. This is something, yeah, I'll talk about this, yeah, if we have time today, but maybe in some other lecture. So for today we can skip this because this needs some advanced algebra. Or again, full अगर full false है तो आपको क्या दे रहा है ये? When it is false, ये आपको सिर्फ कोएफिशिएंट्स दे रहा है, ठीक है? जिस तरह मैंने यहाँ पे बता दिया था, ये जो एज ये आपको दे रहा है आउटपुट पे. बट इफ इट इज ट्रू, तो फुल से आप गेस कर सकते हैं कि आपको फिर क्या दे रहा है. When it is true, it gives us the function. ये उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता है. नहीं, सॉरी, फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करता. वेट I was too quick in judgment. When it is true, the function returns diagnostic information. अच्छा, कुछ diagnostic information भी दे रहा है, maybe आप if something goes wrong, so it still will not return the function, ठीक है? It will only return the coefficients. तो full और not full में सिर्फ ये फर्क है, ठीक है ना? With some extra information. और W और covariance का क्या है? Is an array with weights to apply to the y coordinates. ये भी हम फिलहाल इग्नोर कर लेते हैं because this is some advanced stuff. और this also tells you about the covariant. वो जो covariance matrix है उसको भी ये. And because you do not know how to use these two, I'm skipping this for a while. ठीक है? So polyfit को अगर हम use करें, let's recap. We are skipping many of these options because they require some more knowledge, which we have not covered yet. But what you do know and what you must know is that it takes from you x data, y data, and the degrees. It doesn't ask you for the query point. ठीक है? मतलब जिस तरह आपको यहाँ पे आप दे रहे थे कि यहाँ पे आप उसको यहाँ पे x, y और डिग्री के अलावा आप ये भी दे रहे थे और तभी तो वो कंप्यूट कर रहा था. अब ये क्या करेगा? ये कंप्यूट नहीं करेगा. NumPy आपको सिर्फ ये वेक्टर रिटर्न करेगा कोएफिशिएंट्स का, ठीक है? Which means that this is something which you have to do yourself. And we will see that in this example, ठीक है? So let's say we want to apply this to this function again, a linear function, straight line. We generate data, x data, then we use this function
then we add some noise, and then we pretend that we don't know the line, then we want to test it. ये आपका वो query points है ना, जिस पे आप compute कर रहे हैं, computational points of computation. तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हम जब इस लाइन को numpy का polyfit अप्लाई कर लेते हैं, इसको हमने डेटा दे दिया, इसको हमने y डेटा दे दिया, x डेटा, we require ये 2 क्या है, इसको हमने 2 दे दिया है. तो 2 का मतलब ये है कि we are checking the quadratic. क्या हम quadratic देख रहे हैं, क्योंकि 1 होता अगर हम linear कर रहे थे तो. Let's check it again. D, it is degree of polynomial. So see the point that although we are using a straight line to generate our data, but we are asking for a quadratic. Yeah, you can change it to 1 if you want, but this is how it has been given to you. अच्छा, अब बताएं ये y क्या है? y just to the symbol y should not confuse you. तो ये क्या है आपको? ये आपको क्या रिटर्न करेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया. Unlike your function which we wrote, ये फंक्शन तो आपको वैल्यू दे देगा, ये वाला है, ये वैल्यू दे देगा, लेकिन numpy वैल्यू नहीं देगा. वो numpy आपको वेक्टर ऑफ कोएफिशिएंट्स दे देगा. So despite using y, it is actually giving you the coefficients. ठीक है, coefficients a, वो जो a0, a1 up to a m है, ये वो दे देगा आपको. ठीक है, and that is why those coefficients must be provided to poly 1D. आपको है poly 1D, हमने एक और लेक्चर में कवर किया हुआ था. poly 1D, poly 1D क्या करता है? It asks you for a list of numbers, yeah, and it makes a polynomial function out of it. ठीक है, ये उन वेक्टर्स से poly 1D को आप एक वेक्टर दे दें या एरे दे दें कोएफिशिएंट्स का, ये आपको एक फंक्शन दे देता है जो उस पॉलिनोमियल की जगह फिर चलेगा. ठीक है, सो ये हम पहले भी कर चुके हैं ये इंटरपोलेशन में. सो यू सी दैट दिस, आई डोंट लाइक दिस लेबलिंग, क्योंकि y suggests that it should be data points, but it's not data points. These are coefficients. And similarly, z is misleading. Yeah, z is the function which will compute the polynomial. तो अब आपने इसको चेक करना है, तो आप देखिए ये z आप किस पे अप्लाई कर रहे हैं? आप द पॉइंट ऑफ कंप्यूटेशन पे. तो पॉइंट ऑफ कंप्यूटेशन पे आप सिर्फ फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, so maybe if you want to help yourself, just rename them. Let's call this AA. Yeah, so we'll call this AA, and let's call this PP. PP is polynomial, right? So now you know what I'm talking about. So that was all from NumPy. So NumPy only provides two functions, yeah? Polyfit, giving you the list of coefficients, or NumPy array to be precise, and poly 1D. Poly 1D will require that list of coefficients from you, and it will give you a polynomial. Okay. Poly 1D. अच्छा, poly 1D में एक और भी चीज है जो यहाँ पे इसमें कोड में इसने शो नहीं की है. You have to look for the documentation. Poly 1D can do something else as well, right? अगर आप इसको second and third argument दे दे तो it will compute as well.
So I would encourage you to actually see the documentation. Yeah, poly 1D can be called in different ways. Yeah, in one way it will give you the function, but in another way it can even compute the value. So if you don't need the function, और वो आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में देना पड़ेगा. जो SciPy में ये अवेलेबल है फंक्शन, इंटरपोलेट का भी उसमें मॉड्यूल अवेलेबल है, और इंटरपोलेट में फिर आपके पास देखो ना लाग्रेंज का अपना है, एंड यू कैन सी इट. या सो लेट्स से यू import interpolate as SPI, and that SPI has a function Lagrange, and you can actually test it. Yeah, and make sure to understand that this P is a function, because that P is what we apply to our query point. Similarly, that same SciPy interpolate has another function called cubic spline, और cubic spline का भी वही पैटर्न है, XY, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस में आप दे देते हैं कि या which one is varying, ठीक है, एक्सेस along which y is assumed to be varying. ये मेरे ख्याल में ना मल्टीपल इंडिसेस के लिए है, सो मे बी यू डोंट नीड इट, यू जस्ट गो फॉर द डिफॉल्ट वैल्यू. और ये आपके पास वो डिफरेंट टाइप्स है बाउंड्री पे. आपको याद है कि क्यूबिक स्प्लाइन में बाउंड्री सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है. द कोड अवेलेबल इन द बुक वाज फॉर क्लैम्प्ड, सो यू कैन चूज अदर बाउंड्रीज एज वेल, एंड यू कैन आस्क वेदर यू नीड टू एक्सट्रापोलेट और नॉट. एक्सट्रापोलेट में वो फिर थोड़ा सा साइड पे चला जाता है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे. So if you want to test the cubic spline, generate data and call cubic spline, and you can see, yeah, that it can deal with multiple, yeah, situations. Cubic spline, yeah, cubic spline. सर अटेंडेंस अटेंडेंस तो इसमें ना ऑटोमेटिक होती है. ये जो ओके सर. हाँ, ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये ना पीरियोडिकली, मुझे जो कल समझ आई है मैं जब इसको एक्सप्लोर कर रहा था, तो ये अच्छा आप लोग लिख रहे हैं अटेंडेंस, ठीक है. ये मेरे ख्याल में ना एक फाइल होती है जिसको हम फिर जो है ना वो कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं. सो आई थिंक वी आर डन विद दिस चैप्टर नाउ. और 20 पैन तो हमने वैसे नहीं किए हुए. हाँ, ये इंटरपोलेशन का फिर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है, कि स्प्लाइन में इंटरपोलेशन की कौन से फंक्शंस अवेलेबल है. वो एक या दो फंक्शंस होंगे दैट वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है. ओके, ठीक, थैंक यू. So let me stop.